हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीएल शर्मा, मैथ्स ऑफ will discuss very important examples of NCERT, that is 8, 9, 11, 12, 13 and 14 of chapter 4, that is quadratic equations of class 10th mathematics, and this is part 3. These all examples are very important, and I have seen that the examples have been repeated in the board examinations also. So it is a very important. So actually in this class, I will be discussing with you the quadratic formula, because the finding the roots by completing the square method is deleted. So if ax square plus bx plus c is a quadratic equation, then its solutions are given by minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a. And this formula is said to be quadratic formula. Means you can say the value of x will be given by, the value of x is given by minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a. Here, what is b? Coefficient of x. What is a? Coefficient of x square. And what is c? This is constant term. ए बी सी का हमें पता होना चाहिए. ए है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी है एक्स का कोएफिशिएंट और सी है कांस्टेंट टर्म. और इसी फॉर्मूला को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं. इस पूरी एक्सरसाइज में जो सारे एग्जांपल्स होंगे उसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, मींस उनके रूट्स फाइंड आउट करेंगे. Let ax square plus bx plus c is equal to 0 is a quadratic equation, and we have to find out its roots. But before finding out the roots, we have to determine the nature of roots. पहले हमें इसका nature of roots पता करना पड़ेगा. And nature of roots depend on this b square minus 4ac. ये जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इस पे डिपेंड करता है. नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज b square minus 4ac. This we know this is a quadratic formula. X is equal to minus b plus minus square root of bc स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2. ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए. ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट. DIS डिस्क्रिमिनेंट मींस जो डिस्क्रिमिनेट करता है, जो डिफरेंस बताता है, जो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हमें बताता है. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1, if b square minus 4ac is negative, then roots are not real. अगर डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन मींस जीरो हुआ, लेस देन जीरो मींस नेगेटिव हुआ, तो जो रूट्स होंगे इनके वो रियल नहीं होंगे. नंबर 2, if the discriminant means b square minus 4ac is either 0 or greater than 0. यहाँ पे 2 साइन है. It is if b square minus 4ac is greater than 0, or this is sign of equality or equal to 0, then roots are real. अब इसमें भी दो डिफरेंस हुए. if ये दो सिंबल है, if b square minus 4ac is equal to 0, then the roots are real and equal. दो रूट होंगे लेकिन दोनों ही इक्वल होंगे. And number 2, if
b square minus 4ac is greater than 0, then roots are or roots will be real and distinct. Distinct means different. So here are the nature of the root. First is if b square minus 4ac is less than 0, roots are not real. If b square minus 4ac is either 0 or greater than 0, roots are real. बट यहां भी हमें डिफरेंस करना पड़ेगा. ये टू साइन है, उसको हम फिर मींस डिफरेंशिएट कर देते हैं. if b स्क्वायर माइनस 4ac जो 0 के इक्वल हो जाए तो दोनों ही रूट इक्वल होंगे. रियल तो होंगे लेकिन दोनों रूट इक्वल होंगे. और b स्क्वायर माइनस 4ac इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल. in place of b square minus 4ac we can put directly d, because d stand for discrimination and here discriminant, and discriminant is b square minus 4ac. So keeping in this view, these are nature of root in view, we have to find out the means we have to solve the examples of this exercise. Example number 8. Find the roots of the equation 5x square minus 6x minus 2. So first of all, we have to compare with the standard form, that is ax square plus bx plus c is equal to 0 with 5x square minus 6x minus 2 is equal to 0. We have a is 5, we have b is minus 6, and we have c is minus 2. यहाँ पे जो 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. So a is 5, b is minus 6, and c is minus 2. Then we find out the discriminant. Discriminant here is, that is b square minus 4ac. b is minus 6 whole square minus 4a is 5 and c is minus 2. Minus 6 whole square is 36, and that is minus minus plus 5 4 are 20, 4 2 are 40. That is 76. So we can say since, and that is greater than 0. So since discriminant is greater than 0, greater than 0, therefore roots are, कैसे रूट्स होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट. ये पता करने के बाद इसको हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स. कैसे नेचर ऑफ रूट्स है? रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट. नाउ we have to solve it. Now you put in the quadratic formula. This is our quadratic formula. X is equal to minus b. So we also have to determine here, first of all, the d also, square root of d also. Square root of d is equal to square root of 76. That is 2 into 2 and 24. So 2 root 24. We can write here x is equal to minus b plus minus square root of b upon 2a. Because in place of minus b square upon minus 4ac, we can put here d. What is d? 76. What is the square root of d? 2 root 24. So we can put here further. वैल्यू पुट करते वक्त बहुत ध्यान रखें, माइनस एज इट इज
and in place of b, that is minus 6 plus minus square root of b is 2 root 24, that is 2 root 24 whole upon 2 into a. A is 5. So minus minus plus 6, that is 2 root 24 upon 10. On further simplification, we can take we can divide by 2. So that is we can take 2 common. 3, sorry, it is not 24, it is square root of 76. So it is 19, square root of 19, sorry. So in place of this, we have to put here 19. That is 19. That is 19 upon 10. Please make it correct. Square root of 76 is 2 root 19. 19 4 जा 76, 24 4 जा 96, वो थोड़ा सा गलती हो गया. And now you can cancel this by, that is 2 1 ja 2, 2 5 ja 10. So the answer is 3 plus minus रूट 19 अपॉन 5 आंसर. ये इसका आंसर है. आप चाहें तो इसको डिफरेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं. यू कैन राइट लाइक दिस, और यू कैन राइट x is equal to 3 plus root 19 by 2, and x is equal to 3 minus square root of 19 by 2, and that is the answer of this question. एक बार आपको प्लस साइन लेना पड़ेगा और एक बार आपको माइनस साइन लेना पड़ेगा, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर आप ये भी लिखते हैं देन दैट इज आल्सो करेक्ट. So that's all for this example number 8. Example number 9, comparing 4x square with the standard form, that is ax square plus bx plus c is equal to 0. We have a is equal to 4, b is equal to 3, and c is equal to 5. देखिए, x square coefficient a here is 4, the coefficient of x is here b and here 3, and the constant term is here c and here 5. So पहले हम a, b और c को डिटरमाइन कर लेते हैं. उसके बाद we find out the discriminant. डिस्क्रिमिनेंट से हमें नेचर ऑफ रूट का पता चलेगा, that is b square minus 4ac. So 3 whole square minus 4 into 4 into 5, so that is 9, and this is minus 80 minus 71, and that is less than 0. So we write here answer, since discriminant is less than 0 or negative, therefore no real
root exist. So that is the answer of this question. जब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो हम केवल हम इतना इसका आंसर लिखना होता है, बिकॉज वी कैन नॉट सिंप्लीफाई, वी कैन नॉट सॉल्व इट फर्दर, हम इसके रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो केवल आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करिए, नेचर ऑफ रूट चेक करिए। नेचर ऑफ रूट में अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो वो रूट्स रियल नहीं होते, और आंसर में भी ये लिखना होता है, सिंस डी इज डिस्क्रिमिनेंट is less than 0 or negative, therefore no real root exists. Example number 11, very important. Find two consecutive odd positive integer. It is not means this is odd. Positive integers means natural number, means odd natural numbers है और consecutive है। देखिए, if one number is 1, then its next odd will be 3. What is the difference? 2. If it is 3, next odd will be 5. What is the difference? 2. So we can write here late that 2 consecutive odd positive integers be x and x plus 2. Keep in mind the difference is odd के बीच में जो difference 2 होता है और even number के बीच में भी difference 2 होता है। Now what is given? Sum of their squares is 290, given that दोनों का स्क्वायर करिए, x होल स्क्वायर प्लस x plus 2 whole square is 290. X square plus x square plus 4x plus 4, that is 290. 2x square plus 4x plus 4 minus 290 is 0, or we can say 2x square plus 4x minus 2, 86 is equal to 0. यहाँ पे देखिए x इसमें लेफ्ट हैंड साइड वी कैन टेक 2 एज कॉमन। जितना ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे इट विल बी इक्वल मींस इजी फॉर यू। Now, or we can write x square plus 2x minus 143, that is 0 by 2, that is 0. So this is our quadratic equation, x square plus 2x minus 143 is equal to 0. ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। Now we have to simplify it. We have to find out the value of x here. So nature of roots हमें compare करने पड़ेंगे. Now comparing x square plus 2x with the standard form ax square plus bx plus c is equal to 0. We have a is 1, b is plus 2, and c is minus 143. कंपेयर किया हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का और कांस्टेंट टर्म का। a is 1, b is 2, and c is minus 143. Now we have to find out the discriminant, that is b square minus 4ac, so 2 whole square minus 4 into 1 into minus
143, that is 4 plus minus minus plus, that is 572, and this is 576, which is greater than 0. So we can write, since discriminant is greater than 0, therefore what is the nature? Roots are real and distinct. Distinct means different. ये हमने इसका फाइंड आउट किया नेचर ऑफ रूट। देखिए, पहले इंफॉर्मेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया। डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे हमने इसका नेचर बताया कि व्हाट काइंड ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी। We can say since the discriminant is greater than 0, means positive, that is why its roots will be real and distinct. And our equation is x square plus 2x minus 143. Now we have to solve it out. Now, using quadratic formula, minus b plus minus d upon 2a. We know d is 576, so square root of d is square root of 576, that is 24. 24 square is 500, means 76. आप इसको learn कर लीजिएगा. So we can put here minus as it is, that is 2 plus minus 24 upon 2 into 1. So x is equal to, you can take means 2 common, that is minus 1 plus minus 12 upon 2. This 2 and this 2 cancel. X is equal to, further we can write minus 1 plus minus 1, 12. एक बार हमें प्लस लेना पड़ेगा और एक बार हमें इसको माइनस लेना पड़ेगा. सो फर्दर ऑन राइटिंग फर्दर, देयरफॉर नाउ x is equal to minus 1 plus 12 और x is equal to minus 1 minus 12. x is equal to 11 और x is equal to minus 30. दो आंसर इसके हैं, x 11 भी है और x minus 30 भी है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें रूट्स को वेरीफाई करना पड़ता है. एक्चुअली व्हाट इज x? In the equation, if we say x is positive integer means natural number. x natural number होना चाहिए, लेकिन -13 यहाँ पे natural number नहीं है. That is why what can we do here? We can write here rejected. So only the one value there, therefore x is equal to 11. केवल हमारे पास x का 11 वैल्यू है, लेकिन but therefore the integers are x and x plus 2. What is x? 11 and 11 plus 2, that is 13. The means we can say the odd पॉजिटिव इंटीजर्स. ये क्वेश्चन में ये था कि odd पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है. हमने सपोज कर रखा है one is x, other is x plus 2. यहाँ पे हमें केवल x का वैल्यू 11 ही पुट करना है. We can not put -13 because the -13 is rejected. So required numbers are, therefore 11 and 13 answer. That's all for this question. Example number 12 from your book. A rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meter less than its length. देखिए, ये हमारा रेक्टेंगुलर पार्क है.
ये इसका लेंथ, ये इसका ब्रेड्थ है x मीटर, लेंथ है x प्लस 3 मीटर। लेंथ अगर क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि लेंथ से ब्रेड 3 मीटर कम है, या लेंथ इज 3 मीटर मोर देन द ब्रेड, so later the breadth is x meter, so length will be x plus 3 meter. Next, its area is to be 4 square meter more than the area of a park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth. देखिएगा, ये जो इसके पास पहले से एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और उसका ऑल्टीट्यूड 12 मीटर है, इफ दिस इज x so this is also x. We know that area of a triangle is 1 by 2 into base into altitude, and area of rectangle is given by length into breadth. Yeah. So let the breadth of rectangular park be x meter, that is x meter, breadth be x meter, length is x plus 3 meter. Its area will be given by length into breadth, means x into x plus 3, that is x square plus 3x. So its area is x square plus 3x meter square. And the area of this triangle is given by 1 by 2 into base into altitude. Area of a triangle is 1 by 2. We know the formula. Area of a triangle is given by 1 by 2 into base into corresponding height or altitude. 1 by 2, base is x and height is 12, that is 6x meter square, and it is written 6x meter square, and this is given by x square plus 3x. So its area, this is 6x meter square. अब now what condition is given, ये condition दे रखा है कि ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो पार्क बना हुआ है उसका एरिया में अगर 4 ऐड कर देंगे, देन वी विल बी गेटिंग द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पार्क. Yes, its area is to be 4 square meter more than the square of the park that has already been made in the shape of an isosceles triangle. ये 6x से जो पार्क का एरिया है 4 ज्यादा है, so we can write here x square plus 3x is equal to 6x plus 4, so that is x square minus 3x plus 4, and this is a required means formula. ये हमारे पास required formula है. अब देखिए, अब इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे. x square minus 3x by 4. So now comparing with, you can also try. Comparing x square minus 3x minus 4 is equal to 0 with the standard form ax square plus bx plus c is equal to 0. Here a is 1, b is minus 3, and c is minus 4. We find out the discriminant. Discriminant is given by b square minus 4ac, that is minus 3 whole square minus 4 into 1 into minus 4. So 3 3s are 9 plus 16, that is 25. So we can write, and it means discriminant is greater than 0. Therefore, roots are real and distinct. Distinct means different. जो इसके जो रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे. देखिए पहले क्या किया,
First we form the quadratic equation, then we find out the nature of roots, and now we can put this in. So therefore, d is equal to 25. So square root of d will be given by square root of 25, that is plus minus 5. यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हम पुट करेंगे x is equal to minus b. It is given, equation is given, x is equal to minus b plus minus square root of d upon 2a से देखिए -3 दैट विल बी +3, क्योंकि माइनस पहले से है, b की जगह -3 पुट करें, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट इज √25 दैट कैन बी रिटन एज 5. एक बार आप प्लस लीजिए, एक बार माइनस लीजिए, x is 4 and x is equal to -1. Again, x is the breadth and breadth cannot be negative. That is why x is equal to -1 is rejected. And what is left? Only x is equal to 4 left. So what is the value of x here? x is equal to 4. अब हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं. मींस तो ये तो हो गया, इसका ब्रेड्थ हो गया 4 मीटर और इसका जो लेंथ हो गया 4 + 3 दैट इज मींस 7 मीटर. And what is the area of the park? That is 7 4 28. ये इसका एरिया हो गया पार्क का, because length is 7, breadth is 4, area of rectangle is length into breadth, that is 7 4 28. And area of triangular park you can put in this formula, 1/2 into base into altitude. You can put here, that is 6x. It is already given 6x. The value of x we already have determined, that is 4. Put karenge, that is 6 into 4, that is 24 meter square. So area of the park is 28. Area of triangular park with this park is 24 meter square, and that is the answer of this question. That's all for this question. Example 13. Find the roots of the following quadratic equation if they exist. If they exist, हमें कैसे पता चलेगा कि roots means imaginary तो नहीं है, not real तो नहीं है. उसको हमें first of all we have to find out by the discriminant and using the quadratic formula. Taking first here, that is 3x square minus 5x plus 2 is equal to 0. Comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0. We have a is +3, b is -5, and c is 2. Now, finding the discriminant for the nature of roots, that is b square minus 4ac minus 5 whole square minus 4 into 3 into 2, that is minus 5 whole square is 25 minus 24, that is 1, and 1 is greater than 0. Therefore, since discriminant is positive, therefore roots are real and distinct. ये है इसका नेचर ऑफ रूट्स. कैसे रूट्स हैं? रूट्स इसके रियल भी होंगे, मींस कोई रियल नंबर होगा, मींस कोई रेशनल और इरेशनल नंबर होगा, और दोनों रूट्स, दोनों जो इसके आंसर्स हैं, दोनों इसके सॉल्यूशंस हैं, वो डिफरेंट होंगे. एंड नाउ since d is 1, so square root of d is square root of 1, that is plus minus 1. इसका 1 होगा. Now putting these values in this quadratic formula,
You can put here x is equal to minus and b is minus 5 plus minus 1 अपॉन 2 इंटू 3। देखिए ये माइनस तो फॉर्मूला का माइनस है और बी की जगह ब्रैकेट में माइनस लिखेंगे, सो माइनस माइनस प्लस, सो दैट इज 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 6। Therefore, one time you can take plus or other time you can take minus 1 by 6. So that is 6 upon 6, that is 1. Or x is 4 upon 6, that is 2 by 3. Therefore, roots are 1 and 2 by 3 आंसर। इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे 1 and 2 upon 3। That's all for this example number 13. Means first part. Second part. Compare coefficient with the standard form ax square plus bx plus c is equal to 0. We have a is equal to 1, b is plus 4, and c is 5. Now finding the discriminant, four whole square minus 4 into 1 into 5, that is 16 minus 20, that is minus 4, which is less than 0. So we can write here, since discriminant is negative or less than 0, therefore no real root exists, and this is आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका कोई भी जो रूट होगा वो रियल नहीं होगा और यही इसका आंसर है। हम इसको इसके वी कैन नॉट सिंप्लीफाई इट फर्दर, वी कैन नॉट फाइंड आउट इट्स रूट्स बिकॉज रूट्स आर नॉट रियल। सो इट इज स्टूडेंट, ये बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने से पहले उसका नेचर पता कर लेना चाहिए। वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू सॉल्व इट अगर उसके रूट्स रियल हों। अगर उसके रूट रियल नहीं होंगे तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट, टू एक्स स्क्वायर comparing the coefficient with the standard form ax square plus bx plus c is equal to 0. We have a is equal to 2, b is equal to minus 2 root 2, and c is equal to. Now discriminant for nature of root के लिए हमें discriminant find out करना पड़ेगा, that is b square minus 4ac minus 2 root 2 whole square minus 4 into 2 into 1. देखिए ये minus 2 square is plus 4, root 2 square is 2,
4 to the 8, so 8 minus 8 is equal to 0. So we have to write what is the interpretation यहाँ पे अगर discriminant 0 आ जाता तो क्या होगा तो we can say since discriminant is 0 therefore roots are real and equal, real and same, real and repeated. खूब सारे आप वर्ड यूज कर सकते हो यहाँ पे. Now, since the discriminant is 0, therefore b square minus 4ac will be 0. Because b square minus 4ac is equal to 0, so in place of this b square minus 4ac, we can put 0 here. So now, x is minus plus minus 0 upon 2a. Put the value of b minus, what is the value of b? That is minus 2 root 2 plus minus 0 upon 2 into 2. You can write minus 2 root 2 upon 4. You can write minus plus root 2 upon 2 आंसर्स. आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो देखिए ये दोनों ही आंसर होंगे. रूट 2 अपॉन 2. यू कैन राइट रूट 2 is root, sorry, this 2 can be written as root 2 into root 2. So we can write here root 2 into root 2, 1 root 2 cancel, so 1 upon root 2. That is the answer here. ये है तो दो आंसर, बिकॉज 1 प्लस रूट 2 में 0 ऐड करेंगे तो भी यही आएगा, 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे भी यही आएगा. सो वी कैन से हियर, देयरफॉर वी कैन से दैट रूट्स आर 1 by root 2 and 1 by root 2 आंसर. दोनों सेम रूट हैं. दोनों सेम कैसे आ गए कि इसमें अगर प्लस एट 0 ऐड करेंगे तो भी 1 by root 2 एंड 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे देन इट इज ऑल्सो 1 upon root 2. अगर आप 1 भी लिखते हो तो दैट इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर. दैट इज नॉट इनकरेक्ट. Example 14. Find the roots of the following equation. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो व्हाट वी डू, फर्स्ट पार्ट इज x upon 1 plus 1 upon x is equal to 3. Taking x LCM, that is x square plus 1, that is 3. That is x square plus 1, this is 3x. X square minus 3x plus 1 is equal to 0. And this is our quadratic means equation. ये quadratic इसका फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड quadratic फॉर्म हो गया. Comparing with the standard form, ax square plus bx plus c is equal to 0, we have a is equal to 1, b is equal to minus 3 and c is equal to 1. देखिए यहां से हमें कोफिशिएंट को कंपेयर करना है. एक्स स्क्वायर हियर, एक्स स्क्वायर, सो a is equal to 1. x here, so b is equal to minus 3 and c is equal to 1. Now we have to determine the nature of roots. Nature of roots के लिए हमें discriminant find करना पड़ेगा. Now discriminant is b square minus 4ac. Minus 3 whole square minus 4 into 1 into 1. You can write 9 minus 4, that is 5. This is greater than 0. Therefore, roots are
रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर ग्रेटर देन 0 होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो उसका जो रूट होता है रियल भी होता है और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट भी होता है। So we can write here d is equal to root 5. So that is, we can write so plus minus, that is root 5. Now we putting these values in this formula, that is minus b. What is b? That is minus 3 plus minus root 5 upon 2 into a is 1. So x is equal to minus 3 plus minus root 5 by 2. This is आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इसको सेपरेट लिखना चाहो लिख सकते हो, ये भी आपका करेक्ट आंसर है। यू कैन ऑल्सो राइट x is minus 3 plus root 5 by 2 and x is minus 3 minus root 5 by 2। इन दोनों को कंबाइनली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मींस बोथ आर करेक्ट आंसर्स। So that's all for this first part of example number 14. Second part, 1 upon x minus 1 upon x minus 2, that is 3. पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। Taking LCM means product of the both the denominators, so that is x minus 2 minus x, that is 3. आपको एलसीएम लेने में परेशानी आए तो आप मुझे मीन्स कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसके लिए आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा। x minus 2 minus x upon x square minus 2x, that is 3, plus x minus x cancel. So we can write minus 2 is equal to 3x square minus 2x. Minus 2 can be written as 3x square minus 6x. We can write 3x square minus 6x plus 2 is equal to 0. आप इस माइनस 2 को आप राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी 0. 3x square minus 6x plus 2 is equal to 0, and this is our required quadratic equation. ये quadratic equation है। And now what we have to do? Compare with. अब कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। We have a is equal to 3, b is equal to minus 6, and c is equal to 2. नेचर ऑफ रूट्स का हम डिटरमाइन करेंगे। सो नाउ discriminant is b square minus 4ac minus 6 whole square minus 4 into 3 into 2, that is 36. 36 minus 24, that is 12, and which is greater than 0. So since discriminant is greater than 0, therefore roots are real and distinct. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एलसीएम लेके इसको इस फॉर्म में लिखा, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हुई। फिर ए बी सी का हमने पता किया, फिर डिस्क्रिमिनेंट से इसका नेचर ऑफ रूट्स का पता किया। अब
क्योंकि ये इसके रूट्स रियल है, नाउ वी कैन डिटरमाइन इट, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट. So how to find out? See here. So putting in the formula now, since d is 12, so square root of d is square root of 12, we can write 2 root 3. So x is equal to minus b, that is minus 6 plus minus b, that is 2 root 3 upon 2 into a, and a is 3. चेक करिए, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है और डिस्क्रिमिनेंट हमारा 12 है. स्क्वायर रूट ऑफ b होगा 2 रूट 3 से 2 रूट 3 माइनस फॉर्मूला में है b की जगह आपने लिखा माइनस 6. ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हर बार लिखिए. इफ यू राइट विद द आंसर आपको हाफ मार्क फॉर्मूला लिखने का मिल जाता है. सो प्लीज डोंट अवॉइड दिस. एबीसी फाइंड आउट करने का कुछ मार्क मिलेगा, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट का कुछ मार्क मिलेगा, कन्वर्ट करने का कुछ मार्क मिलता है. स्टेप मार्किंग में आपको बहुत से मार्क आप इस कंप्लीट फुल मार्क के करीब पहुंचा देते हैं. दैट इज 6 plus minus 2 root 3 by 2 into 3. न्यूमरेटर में आपने 2 कॉमन लिया, 3 plus minus root 3, that is whole upon 2 into 3. This 2 and this 2 cancel. So what is left? So x is equal to 3 plus minus root 3 by 3, and this is answer of this question. आपको इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, सेपरेटली भी लिखने की जरूरत नहीं है. अगर आपको लगता है कि आपको लिखना चाहिए, इफ यू हैव टाइम, देन यू कैन राइट x is equal to 3 plus root 3 by 3 और x is equal to 3 minus root 3 by 3 आंसर. वैसे यही आंसर आपका सफिशिएंट है. So that's all for this second part of this question. So thank you very much.